To the next session. We start the sessions now. I request Dr. Vedprakash Sharma ji to come over to the stage. He'll be the chairperson of this session. I request Professor Pragna Pasi ji to take over. And whoever is available. Okay, I'll announce the names. Vijeta Sharma, Pratibha Kumari, Abha Singhal, Dr. Anjali Devi, Sunila Kaustubh, okay, Sonali Marandi is here, Malini Ramsubramanya, Somitra Thakur, Vrishali Dwivedi, okay, Shivram Narayan Mopatkar. Okay, I think most of the participants are here. Foreign scholars. And there are some foreign scholars also. Chandana, Ruwan, Kumara, PGCMT Bandara, AWA Chameera Lakshan, Isuru Rushan, Suraiya Islam Ria, Dr. Patanjali Mungar and Gurasingha. So now we are going to start the sessions. The chairpersons for these sessions will be Professor Rohitha Eswer and Dr. Vedprakash ji. I invite Manasa to introduce both the chairpersons now. Good morning. Now I am going to introduce Professor Rohitha Eswer. Professor Rohitha Eswer is a postgraduate in Ancient History, Culture and Archaeology from the Deccan College Research Institute, Pune. Dr. Rohitha Eswer holds a PhD in Archaeology and has worked extensively on dance sculptures in the temples of Belur, Halebeedu and Konark. He is currently a professor and research guide at the Department of Ancient History and Archaeology and Museology, Maharaja's College, University of Mysore. He is a recipient of UGC National Merit Scholarship for Advanced Studies in Archaeology. He has travelled extensively giving performances, lectures and workshops in several states in India. Dr. Rohitha Eswer is the recipient of many international and national awards like Singarmani, Somashri, Lifetime of Achievement from Chidambaram Natyashala Trust, and his outstanding performance from Heritage India Association of North Carolina and many more. Thank you. Now I am going to introduce about Vedprakash Sharma. Dr. Vedprakash Sharma was a senior teacher in Delhi schools and was later promoted to junior lecturer within the same department. He continued to serve there until his superannuation in January 2021. Alongside his professional career, he nurtured a deep interest in musicology. He expanded his knowledge by attending music seminars, reading extensively on the subject, and engaging in thought-provoking discussions with music scholars. Being computer savvy, he also explored audio editing and music composition using various online tools and applications. In recent years, his curiosity has increasingly drawn him towards the philosophy of music, particularly the concept of Naad Brahma. The exploration gradually led him to the broader field of aesthetics with a special focus on the aesthetics of music. Thank you. Now I invite Vijeta Sharma for her presentation. Good morning or good afternoon to everyone here. Myself Vijeta Sharma, research scholar at MSU Baroda. So my research paper is in Hindi. I would go with Hindi. In 2020,
हमने कोरोना का ऐसा टाइम देखा जिसमें हम सब बंद हो गए थे घरों में। उस टाइम सारी चीज़ों में बदलाव हुआ। तो क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में किस तरह से चेंज आए, उस टाइम लोगों ने कैसे उसको अडॉप्ट किया और आगे सस्टेन कैसे कर रहे हैं, मेरा टॉपिक इस बारे में है। तो मैं शुरू करती हूँ। कोरोना महामारी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का डिजिटल रूपांतरण, नवाचार, परंपरा और वैश्विक पहुँच। कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं भी शामिल हैं। सामाजिक दूरी, लॉकडाउन और सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध के कारण कलाकारों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति और शिक्षण के लिए डिजिटल माध्यमों की ओर उन्मुख होना पड़ा। मेरे इस अध्ययन का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने नवाचार के उपकरणों को ईजाद किया। वर्चुअल सांगीतिक आयोजन, ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल जुगलबंदियों ने पारंपरिक ढांचे को चुनौती देते हुए एक नई रचनात्मकता को जन्म दिया और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को प्रदान की। मानव युग सृष्टा है, वह अपनी भावनाओं को पहचानते हुए जिस ओर चाहता है उस दिशा में मोड़ लेता है। जो विचार आज प्रमुख प्रतीत होता है वही कल महत्वहीन हो जाता है। मानव अपनी भावनाओं और परिस्थितियों के अनुसार जीवन की दिशा तय करता है, उसी के अनुरूप उसकी कलाएं भी नए आयाम ग्रहण करती हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हमेशा से समाज की चेतना और भावनाओं का प्रतिबिंब रहा है। वर्ष 2020 में आई वैश्विक महामारी कोरोना ने नाद ब्रह्म की प्राचीन अवधारणा से जुड़ी इस परंपरा को प्रबल चुनौती दी। कोरोना काल मानव इतिहास का एक अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण दौर रहा। इस महामारी ने पूरे विश्व को भय, अनिश्चितता और असुरक्षा के माहौल में झोंक दिया। अचानक जीवन की सामान्य गति थम गई। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, बाजार, कार्यालय सभी बंद हो गए। लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के कारण प्रत्यक्ष शिक्षण एवं सांगीतिक समारोह पूरी तरह बाधित हो गए। इस अप्रत्याशित संकट ने संगीत से जुड़े सभी वर्गों को नई परिस्थितियों में ढलने की चुनौती दी, साथ ही संगीत जगत को नए मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षकों ने गुरु शिष्य परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए एक नई दिशा दी। महाविद्यालयों एवं संगीत संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाओं और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। विश्वविद्यालयों के संगीत विभागों ने डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं संपन्न की। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संगीत एवं मंचकला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय का संगीत विभाग, महाराजी सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर, सभी विश्वविद्यालयों ने डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं, कार्यशालाएं संपन्न कराईं। इनमें से कुछ वेबिनार, कार्यशाला व संगीत कक्षाओं से मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला। परंपरा और नवाचार एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। परंपरा संगीत की जड़ें बनाती है तो नवाचार उसे नवीन आयाम प्रदान करता है। इस परंपरा के प्राचीन प्रतिनिधि जो डिजिटल माध्यमों और मोबाइल तकनीक से दूरी बनाए हुए थे, उन्होंने भी कोरोना महामारी के समय डिजिटल माध्यमों को एक नए अवसर के रूप में अपनाया। अनेक संगीत शिक्षक व कलाकार पहली बार फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से रूबरू हुए। इन प्रयासों ने न केवल स्थानीय विद्यार्थियों को लाभान्वित किया बल्कि देश विदेशों में बैठे शिष्य एवं श्रोतागण को आसानी से जोड़ पाए। ऑनलाइन माध्यमों ने भौगोलिक दूरियों को समाप्त कर एक वैश्विक संगीत समुदाय का निर्माण किया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कोरोना महामारी जैसी अभूतपूर्व परिस्थिति में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने किस प्रकार अपनी परंपरागत रूपरेखाओं को यथावत रखते हुए डिजिटल माध्यमों में नई संभावनाएं खोजी। शोध अध्ययन में डिजिटल रूपांतरण के विविध पहलुओं और उसके प्रभावों तथा भविष्य की दिशा का सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कार्यप्रणाली के लिए मैंने यूज किया है कोरोना काल में प्रकाशित लेख, समाचार पत्र, शोध पत्र, लाइव कॉन्सर्ट्स, ऑनलाइन वर्कशॉप, वेबिनार्स, ऑनलाइन साक्षात्कारों का अध्ययन। कोरोना महामारी के दौरान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गुरुओं एवं कलाकारों के अनुभव, डिजिटल माध्यमों की प्रभावशीलता और शिक्षा एवं प्रस्तुति की गुणवत्ता का मूल्यांकन मेरे इस शोध में किया गया है। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर मैं नजर डालना चाहूंगी, जैसे डिजिटल रूपांतरण। कोरोना महामारी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मंचीय अभिव्यक्तियों और गुरु शिष्य आधारित शिक्षण परंपरा दोनों को तकनीकी स्तर पर सिमिलरली प्रभावित किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मंचीय अभिव्यक्ति।
कोरोना महामारी के दौरान जब कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी तरह से बाधित हो गए, तब पारंपरिक साधनों की अनुपस्थिति ने उन्हें नए विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया। यहीं से डिजिटल रूपांतरण की नई यात्रा प्रारंभ हुई। कोरोना महामारी से पूर्व संगीत की प्रस्तुति का दायरा सभागारों, संगीत समारोहों, विशिष्ट अकादमिक आयोजनों तक सीमित था, किंतु महामारी के दौरान कलाकारों ने कैमरा, माइक्रोफोन, इंटरनेट को ही अपना नया संगीत मंच मानकर प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू किया। घरों के सामान्य कक्ष रिकॉर्डिंग स्टूडियो में परिवर्तित हो गए। प्रसारण तकनीक प्रस्तुति के नए आयाम प्रदान किए। फेसबुक लाइव, यूट्यूब स्ट्रीमिंग, जूम मीटिंग जैसे साधन कलाकारों व श्रोताओं को एक दूसरे से जोड़ने लगे। काइंडली कंक्लूड। आरंभिक स्तर पर यह एक अस्थायी उपाय प्रतीत हुआ, किंतु शीघ्र इसने व्यवस्थित रूप धारण कर लिया। इनमें से कुछ मुख्य पेज: पंडित जसराज जी की पुत्री सुपुत्री दुर्गा जसराज जी का आर्ट एंड आर्टिस्ट, HCL कंपनी का HCL कॉन्सर्ट, दिल्ली के देवेंद्र वर्मा जी का राष्ट्रीय संगीत का परिवार, डॉक्टर रामशंकर द्वारा संचालित पंडित रामाश्रय झा रामरंग, संगीत गुरु ग्वालियर संजय देवले द्वारा संचालित स्वर संस्कार संगीत गुरुकुल ग्वालियर। इन सभी पेजेस ने शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा पारंपरिक संगीत शिक्षा के लिए कुछ प्रमुख फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल ने काम किए, जिनमें से मैं जिन लोगों से मिली हुई हूँ उनमें से एक चैनल है स्वर संस्कार संगीत गुरुकुल ग्वालियर, श्री संजय देवले, जो अभी भी सस्टेन काम को कर रहे हैं। दूसरा पेज है आरंभिका श्रीमती स्मिता सहस्बुद्धे, कुल गुरु RMTU ग्वालियर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके पेज के बारे में मुझे जानने का अवसर मिला। इस पेज के माध्यम से स्मिता सहस्बुद्धे जी फेसबुक पेज से विद्यार्थियों से सतत जुड़ी रहती हैं। परंपरा का संरक्षण और नवाचार मेरा लास्ट है टॉपिक। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पारंपरिक पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठित एवं ग्वालियर घराने के मूर्धन्य गायक डॉक्टर PL गोहतकर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और पारंपरिक गायन की मुख्य बातों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू। थैंक यू। नाद नर्तन के ऑर्गेनाइजर्स और चेयर को मेरा प्रणाम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू द ऑडियंस। माय topic today is reconstructing the Natya Shastra tradition of Kathak through medieval sculptures of North Gujarat. I am Abha Singhal Bansal. I'm a research scholar in Kathak at Swami Vivekanand Subharti University in Meerut. And my guide is Professor Dr. Bhavna Grover ji, who's the HOD in the same university. So sir, how I came to this topic was that very early in life, I had read a paper by Sunil Kothari ji, and then I had somehow forgotten about it. उनका पेपर था अबाउट द सेम द नाट्य शास्त्र ट्रेडिशन और किस तरह से नाट्य शास्त्र ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द स्कल्पचर्स ऑफ वेरियस टेम्पल्स. और उसके बाद व्हेन आई वेंट टू गुजरात एंड आई विजिटेड द मोधेरा सन टेम्पल, सडनली हिज वर्ड्स जस्ट केम वेरी क्लियर टू मी. और बहुत साल पहले का वो जो बैक बर्नर पे रखा हुआ था वो आगे आ गया. एंड आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग द नाट्य शास्त्र अंडर PL भट्टाचार्य जी. सो समहाउ मेरा जो अंदर से जो शोध का जो कीड़ा था वो निकल आया. एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एंड माई हस्बैंड पुअर थिंग ही वॉज लाइक टैगिंग बिहाइंड, चलो चलो जल्दी. एंड आई केप्ट वॉचिंग द स्कल्पचर्स एंड दे समहाउ केम अलाइव इन फ्रंट ऑफ मी. So the objectives of my research are to examine how Kathak's traditional grammar as per the Natya Shastra. Kathak को कहते हैं कि नाट्य शास्त्र ट्रेडिशन फॉलो नहीं करता है, but I believe there is a lot of the नाट्य शास्त्र tradition in Kathak. Of course, Bharatnatyam and the other dance forms may have preserved it better because Kathak was in North India and North India was always going through a lot of evolution because of the various invasions and the various cultures that came in, but somehow I feel that I can see a lot of the tradition also in Kathak. And to decode the dance poses, the gestures, the karanas, the charis, hastamudras in North Gujarat temple art. And then to reconstruct the evolution of Kathak during medieval period and establish intermedial connections between textual theory and visual practice. The texts are ancient, almost 2000 years ago or even that,
And then there was a gap somewhere in between because of the invasions. A lot of text was destroyed, a lot of history was destroyed. But to reconstruct that history will probably give us a little bit of continuity from the text to the present day modern times. So the search for the Natya Shastra tradition of Kathak in sculpture came through the medieval temples, and the clues were the scope of my study. It focuses on the in-depth analysis of the dance sculptures found in the medieval temples of North Gujarat, so as to understand the evolution of the journey, like I just said. The methodology used is the textual analysis of the Natya Shastra and the Abhinay Darpan. These are the main two texts for us dancers. The visual analysis of the sculptures from the Sun Temple at Modhera, built in, which is about 1,000 years old. The Rani Ki Vav, it has beautiful sculptures which was built in the same period, the medieval period. And the Adalaj Nivav, the stepwells of Adalaj, which was built a lot later, but still it has beautiful sculptures in the same tradition. And then a comparative study of the iconography versus the current Kathak techniques. So the findings were very interesting. We saw lots of sculptures. And this one is that of a Nritya Murti. I'm just presenting one or two, sir, just to give a little thing. So we can see that the right foot crosses over the other foot in the swastik position, which is what we often do in Kathak. We also call it the Krishna Pad, or when the foot comes forward and rests on the ground, and we can see the big toe in Urdhvangusht. So the big toe is raised a little bit, and the foot is in Agratal Sanchara, which is also described in the Natya Shastra. The knees are in Shipta position, and the posture is that of a Tribhang. Of course, Tribhang is used less in Kathak and more in the Odissi dance form. However, we do use the Tribhang when we are presenting Lasya. The dancer is looking down on the side with head in Avadhutam position, and the left hand is raised in the Pataka Mudra. We can see the left hand raised in the Pataka Hast, and the right hand is in front in the Dhyan Mudra, depicting Alla Pallava, which we do like this and bring it over here, the Alla Pallava. Another finding, this is the Naika. We can see the Baddhachari over here. The Baddhachari, where the thighs and the shanks are in the, again, the swastik position. The right foot is in Samapada and the left foot in front while the knees are crossing each other. It is similar to the previous one, but in the Baddhachari, if you notice the foot movement, so if I can just come. The Baddhachari, when the foot comes up and it goes down like this. This is the Baddhachari, you can see. Sorry. Madam, please conclude. All right. So I will quickly go to the so the discussion I have already done along with, I will quickly go to the conclusion. This study has sought to explore how the foundational principles of the Natya Shastra are reflected in the sculptural heritage of North Gujarat, and how these visual archives contribute to understanding the evolution and development of Kathak. It challenges the linear and court-centric narrative of Kathak's evolution. Everybody believes that Kathak evolved or started only during the Mughal court period, but this study speaks elsewise, and by decoding these images in dialogue with classical texts, the research underscores the value of sculpture, because sculpture is the only visual proof of what was happening at that point of time. And finally, the bibliography from where I got all the information and how I could research. And I am very thankful to my guide, Professor Bhavna Grover at Swami Vivekanand. I am thankful to my tour guides, Munna and Ashokji at both the places. And I am also thankful to my husband, who was very, very patient with me. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you very much. एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट या कहिए कि हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप यहाँ आकर नाद नर्तन को, रवि सर को और किसी को नमस्ते,
धन्यवाद। ये सब प्लीज़ मत करिए, उसमें 2 मिनट चला जाता है, और बिकॉज़ हमारे पास समय की वैसे ही कमी रहती है, तो आप सभी के बिहाफ पर नाद नर्तन की पूरी टीम को, रवि सर को मैं पहले ही धन्यवाद दे देती हूँ। आप यहाँ आकर डायरेक्टली अपना पेपर, अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, और प्लीज़ आप भी टाइम का ट्रैक रखिए, क्योंकि हमें वहाँ से बोलना बहुत ख़राब लगता है कि आप अब फिनिश कर दीजिए। प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑन टाइम। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर अंजलि देवी यादव, इज शी हियर? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सुनीला कौस्तुभ, प्लीज़ आप बैक स्टेज आ जाइए। सुनीला कौस्तुभ नहीं है? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट विद्वान मालिनी रामसुब्रमण्यम, प्लीज़ कम बैक स्टेज। मेरा शोध का विषय है संस्थागत व्यवस्था में गुरु शिष्य परंपरा का परिवर्तन। ओके। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता के हस्ताक्षर की आधारशिला रही है। प्राचीन काल में शिक्षा आश्रमों, मठों और संप्रदायों के माध्यम से संचालित होती थी, जहाँ संगीत जैसे विषयों में घराना पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। समय के साथ संगीत को समाज में उपेक्षित दृष्टि से देखा जाने लगा, किंतु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित भातखंडे जी के प्रयासों से संगीत संस्थागत स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित हुआ। शासन ने पारंपरिक शिक्षण प्रणालियों को हाशिए पर डालकर आधुनिक संस्थागत शिक्षा की नींव रखी, जिससे गुरु शिष्य संबंध औपचारिक हो गए। स्वतंत्रता के बाद आर्य समाज, मठों और संप्रदायों ने पारस्परिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई। आधुनिक युग में विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं तथा डिजिटल मंचों पर यह संबंध लचीला तो हुआ है, लेकिन आत्मीयता में कमी आई है। डिजिटल शिक्षा ने ज्ञान को सुलभ बनाया है, पर गुणवत्ता और पारदर्शिता की चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। आज आवश्यकता है कि हम गुरु शिष्य परंपरा की आत्मा, ज्ञान का समर्पित नैतिक और संवेदनशील हस्ताक्षर को पुनः जागृत करें, ताकि यह परंपरा आधुनिक संदर्भों में भी जीवित रह सके। संस्थागत व्यवस्था का उदय और परिवर्तन किस प्रकार हुआ? संस्थागत व्यवस्था का उदय और परिवर्तन भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों, मठों और संप्रदायों के माध्यम से संचालित होती थी, जहां गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। हालांकि ये ब्रिटिश शासन ने पारस्परिक शिक्षा प्रणालियों को हाशिए पर डालकर पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिससे गुरुकुल प्रणाली का ह्रास हुआ। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 1813 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम और आयोग बनाए, जिसके माध्यम से अंग्रेजी और पश्चिमी विषयों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। इस परिवर्तन ने शिक्षा को अधिक औपचारिक और संस्थागत बना दिया, जिससे गुरु शिष्य परंपरा की आत्मीयता में कमी आई। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलित स्थापित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार संस्थागत व्यवस्था का उदय और परिवर्तन भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली परंपरा आधुनिक युग में गुरु शिष्य परंपरा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। प्राचीन काल में यह संबंध आत्मीयता, आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तिगत था, जिसमें गुरु शिष्य के जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते थे। हालांकि औद्योगिकीकरण और पश्चिमी शिक्षा पद्धतियों के प्रभाव से यह संबंध औपचारिक और व्यावसायिक हो गया है। शिक्षक अब केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करने वाले माने जाते हैं, जबकि शिष्य भी उन्हें एक मार्गदर्शन से अधिक एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। इस परिवर्तन के बावजूद कुछ शिक्षकों ने अपने छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफलता प्राप्त की है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगी। विश्वविद्यालय और संस्थागत शिक्षा।
आधुनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। यहाँ शिक्षक और छात्र के बीच संबंध औपचारिक होता है और गुरु शिष्य परंपरा की आत्मीयता में कमी हो गई है। शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिससे शिक्षण ओके निष्कर्ष में आती हूँ। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और आगे भी रहेगी। इसमें ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता का हस्ताक्षरण होता रहा है। प्राचीन काल में यह संबंध गुरुकुल, मठ और संप्रदायों के माध्यम से व्यक्तिगत, भावात्मक और नैतिक रूप से गहराई लिए होता था। विशेषकर संगीत जैसे क्षेत्रों में यह परंपरा घराना पद्धति के रूप में विकसित हुई, किंतु ब्रिटिश शिक्षा नीतियां और सामाजिक परिवर्तनों के चलते यह व्यवस्था कमज़ोर हुई। पंडित विश्व दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी ने संगीत को संस्थागत रूप देकर अपनी गरिमा को पुनः स्थापित किया है। थैंक यू सर। थैंक यू। Our next presenter is Sonali Marandi, and next two participants, Vidwan Malini Ramsubramanya and Somitra Thakur. I request them to come to backstage. I'm going to present my research paper on digital aesthetic strategies on YouTube versus Instagram, a case study of young Hindustani classical musician. First, let me define digital aesthetics. It is the combination of musical, visual and performative strategies that young Hindustani musicians use to align their artistry with social media platforms. On YouTube, this often means longer concert-style presentation, while on Instagram, it takes the form of short visual dynamic reels. In short, digital aesthetic is how artists reshape classical music to maximize reach, visibility and engagement online. The main objectives of this study are threefold. First, to identify the digital aesthetic strategies musicians use on YouTube and Instagram. Second, to compare audience engagement in relation to factors like views, tempo and duration. And third, to explore difference between instrumentalist and vocalist. The scope of this study is defined by two major platforms, YouTube and Instagram. The data set includes 6 instrumentalists and vocalists with 5 most viewed uploads from each platform per artist, making a total of 120 uploads between 2006 and 2025. This research is a quantitative study. I used Excel pivot table and descriptive statistic to analyze views, duration, tempo and trends. The data set focuses on the most viewed uploads to capture high impact strategies. A limitation is that this excludes less population but potentially innovative content, and the study does not include direct interviews. The results reveal a clear difference between platforms. On YouTube, long duration classical and semi-classical performances, often recorded live, attract steady audience. On the other hand, Instagram favors short reels, fast tempo, fusion of filmy content and visually dynamic presentations. Fast tempo drive virality on Instagram, while instrumentalists perform better on reels due to their strong visual appeal. Vocalists, however, retain strength on YouTube, where audience seek extended ragas across both platforms. Collaboration consistently bring high engagement. Please take a quick look on tempo range, which shows that most of the videos with higher average view belong to medium tempo. This is a comparative chart of average view based on tempo, and it is clearly visible that average view on Insta Reels, indicated in red color, is very high as compared to the YouTube on tempi.
This graph shows that solo and duet performances are mostly viewed on Instagram and YouTube both. How Hindustani musicians strategize their online presence. Instagram bring virality and visual appeal, while YouTube preserve authenticity and depth. Musicians balance innovation and tradition to sustain relevance in a digital era. This research links digital aesthetic to the sustainability of classical music. In future, the study could be expanded by analyzing audience reception through likes, comments, and interviews with musicians to understand their intention. These are my references. I want to acknowledge my supervisor, guide, and mentor, Dr. Pragya Pyasi ma'am, for all her support to conduct this research. Thank you all for listening to me. Now I invite our next participant, Vidwan Malini Ramsubramanya. And next two participants are Somitra Thakur and Vrishali Dwivedi. I request them to come to backstage. Namaste to one and all. I will be speaking about twin ragas in Tyagaraja's lineage. Allied ragas or twin ragas are those ragas taking birth from the same parent raga, having similar arohana, avrohana, some common phrases. In spite of this, they appear very different from one another, and most of the times they appear very similar as though they are one and the same. Now, in Tyagaraja's lineage, how these ragas are dealt, that is my topic. Tyagaraja, one of the trinities, has extensive Shishya Parampara and offers a very fertile ground for scholarly exploration. Since this study focuses on transmission of ideas of handling twin ragas across generations, depending on the availability of compositions of Tyagaraja's Shishyas or disciples in allied ragas, this legacy is considered. Tyagaraja, his first generation Shishya Manampuchadi Venkatasubbayar or Valajpete Venkatamana Bhagavatar, next generation Patna Subramanyar, and next generation is Mysore Vasadevacharya. This the generation to generation, how the flow has been gone. So these are the kritis that are available in the allied set, Kedar Gaula and Suruti. First of all, I am considering first generation Shishya Valajpete Venkatamana Bhagavatar and Tyagaraja versus Tyagaraja. So from the tabular column, we can see that around 8 to 10 kritis have been composed by Tyagaraja and one kriti or one composition by his disciple. It can be Swarajati, it can be Tillana, it can be Varnam or anything. So one composition we can see versus 10 compositions. Similarly in Kedar Gaula also. Coming to the findings. So here, starting phrase of the Kedar Gaula Kriti. Not working. Rama Ravi Kula Sudabdi Soma Dasharatha So here if we consider Tillana, Tam tana dirana dirata dirana. So tam tana, it starts like this. If you consider Kriti of Tyagaraja, Ramuni Maravakave. So starting is similar of both the kritis. Another kriti also starts in the same way. Venugana loluni ganave. So the tradition which flows from Guru to Shishya you can see in both Swarajati and Tillana. Now coming to the Anupallavi or Charana, here also you can see the similar pattern. Charana begins with Madhyama, and again Dharmatma, in Kriti Dharmatma, Charana begins with Madhyama.
Patita Pavanudani, giving the essence of the raga in the just beginning few sangatis of the kriti, that is the style of Tyagaraja. And here in Suruti kriti or Suruti Swarajati or Suruti kriti of Valachpete Venkataramana Bhagavatar, we can observe that in the beginning phrase itself gives the essence of the raga. Sanhidapa is the phrase for Suruti. Jnana Swarupamo. It starts like this. Pati ki harati re Sanidapa. So Sanidapa is same for Kedaragola and also Suruti. Sanidapa Magari re Magasa. It is for Kedaragola. So how to identify which is Kedaragola and which is Suruti? So soon after this Sanidapa Magapa Mari. Please conclude. Yes, sir. So in this way, similar phrase is connected with distinguishing phrase to give the essence of the particular raga. Even though they are allied, they have their own characteristic phrases together with the common phrases. So in the same way, second generation Shishyas, Patnam Subramaniya's kritis with Tyagaraja, and third generation Shishya Vasudevacharya with Tyagaraja has been analyzed. From this analysis, it can be concluded that starting phrases, graha phases, sangatis show the continuity or flow of tradition across generations. Shishyas of Tyagaraja have contributed beautiful musical forms like Jatiswara, Swarajati, Varnam, Stilana, etc. etc. But we can observe only kritis with Tyagaraja. Analysis of kritis of Tyagaraja in each raga gives broad perspective of the distinguishing phrases of twin ragas, how it is beautifully connected with similar phrases to depict the raga bhava. Hence, this study mainly focuses on the importance of transmission of classical arts in preserving the treasure, maintaining its structure, and passing it across several generations. So, it is very important thing to maintain our tradition, pass it on to our generations to maintain the structure. So, which is the important as a concept that of this conference. Thank you for Naad Nartan organizing such a beautiful event here, giving us a wonderful opportunity. Thank you one and all. Thank you, Anna. I thank my guide for supporting and giving me guidance. Thank you. Now I would like to invite our next presenter, Somitra Thakur, onto the stage. And next presenters are Vrishali Dwivedi and Priyadosh Karnatak. I request them to come on to backstage. Good afternoon to everybody here present here. My name is Somitra Thakur and I'm a research scholar from Delhi University. The topic which I will be talking you and taking you through is known as Surbahar in Bishnupur Gharana, from the courts of Bahadur Khan to modern masters. Well, before I start talking about gharanas and everything, I would like to tell you a brief information about the instrument Surbahar. We all know about sitar. सुरबहार एक इंस्ट्रूमेंट थोड़ा अप्रचलित ही है अभी भी. इट्स लाइक द बेस वर्जन टू द सितार. जैसे चेलो है वायलिन के लिए, वैसे सुरबहार है सितार के लिए. सितार इज़ एन ओल्डर इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू द सुरबहार. सुरबहार इज़ अ मच न्यूअर इंस्ट्रूमेंट. इट वॉज डेवलप्ड ओनली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. वेल, घराना के बारे में भी हम सब जानते हैं. आई वोंट बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट घराना इन पर्टिकुलर, बट घराना बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है हमारे म्यूज़िक में, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में. उन्हीं में से एक घराना है द बिष्णुपुर घराना, अबाउट विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट, एंड माई स्पेशलाइजेशन इज़ ऑन द सुरबहार ट्रेडिशन ऑफ द बिष्णुपुर घराना. The objectives of my research are to document and analyze the Surbahar tradition of the Bishnupur Gharana, its evolution, playing techniques, and everything related to it. There is a lot of things that has been written about sitar in particular, but hardly about the Surbahar. So that is why I have taken up this work of, writing a lot about Surbahar and bring the instrument to forefront, especially in the research arena. There are people who play it, people who do it in the practical side of it, but written work is something which I wanted to bring in, and that's why this is what I am doing. The Bishnupur Gharana is what I am going to talk to you about more today.
So the Bishnupur Gharana is probably the only Gharana from West Bengal and one of the oldest Gharanas in India. Bishnupur Gharana was started probably in the 1750s, 1760s. It's very difficult to exactly notate when was it. So in the mid of the early 18th century, I would say. From there it started. Bishnupur Gharana was mainly a Gharana which was trying to uphold the tradition of Dhrupad music, you know. So, and Dhrupad jahan hai, wahan Surbahar to aayega hi, because Surbahar, the instrument itself, was created to play the intricacies and the styles of Rudra Veena. उस समय क्या था कि सेनिया के बाहर सिखाया नहीं जाता था रुद्र वीणा को, जिसको हम बीन बोलते हैं. And that is why the instrument, the Surbahar, was developed. It's a lot of things that I have written in my thesis, so I'm not going to talk to you right now about it. So इसीलिए Surbahar in the Bishnupur Gharana became an integral part because people started playing it there. The artists of that time, gurus, started teaching because Dhrupad was an essential component of the Gharana. The research reveals that Bishnupur Gharana occupies a special place in Hindustani classical music for nurturing the Surbahar alongside its strong Dhrupad tradition, something which is very important here. The people who have played, जिसके बारे में मैंने काफ़ी लिखा है, the people who have played the Surbahar is something which is very important in my findings. जो नाम आते हैं जिन्होंने बजाया है historically and in the present generation, जिन्होंने बजाया है पंडित राम प्रसन्ना बंदोपाध्याय, गोपेश्वर बंदोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, later on पंडित गोकुल नाग, father of Pandit Maninal Nagji, and Maninal Nagji himself has played the Surbahar. We find recordings of him as well. And later on, his daughter, Vidushi Meeta Nag, has also played the Surbahar. The scope of the research, it explores the Bishnupur Gharana's unique role in preserving and shaping the Surbahar tradition. Written material nahi tha, isiliye this is what I have been trying to do, to bring and to write down as much as possible so that people like you and others can read it, you know, how important it is to preserve the history of the Surbahar. Methodology, I have used qualitative research, historical analysis, oral history, and I have been very lucky that I have gotten interviews of some beautiful people, of whose I have mentioned their names later on. To conclude, given that Dhrupad was the central format of music in the Bishnupur Gharana, the Surbahar became a key instrument in the tradition. Artists from this Gharana were primarily trained in Dhrupad, and even sitar players followed the Dhrupad style of presentation on their instruments, establishing Surbahar's prominent role in the Bishnupur Gharana. Unlike in many other Gharanas where the Surbahar was considered secondary to the sitar, in the Bishnupur it held a more integrated role, particularly due to its affinity with the Dhrupad tradition that forms the foundation of this Gharana. I have used books like the one written by J. Hamilton, Sitar Music in Calcutta, the book by Alan Miner, Sitar and Sarod in the 18th-19th century, and many other books that I have used, apart from the paper and online presentations that I have read about and written here. And interviews, some very important names that I need to mention, from whom I have got a lot of information about the Surbahar tradition in Surbahar tradition of Dhrupad Gharana. I'll just conclude in a minute. Pandit Anindo Banerjee, Dr. Ashwin Dalvi, Pandit Nayan Ghosh, Vidushi Meeta Nag, amongst a plethora of others. And plus I have heard a lot of recordings जिनसे मैंने use करके यहाँ पे मेरे paper के बारे में लिखा है. Thank you so much. Thank you. Thank you. Next, I would like to invite Vrishali Dwivedi onto the stage. And our next participants are Preetosh Karnatak and Modi Tanvi. Everyone, I am Vrishali Dwivedi, research scholar from Dayanand Girls PG College, Kanpur. आज की इस संगोष्ठी में मेरे शोध पत्र का शीर्षक है पंडित काशीनाथ शंकर बोडस, जीवन वृत्त, सांगीतिक साधना एवं संगीत संबंधी उनकी विशिष्ट दृष्टि। पंडित काशीनाथ शंकर बोडस जी का जन्म 4 दिसंबर 1935 को कानपुर के एक सांगीतिक परिवार में हुआ। काशीनाथ बोडस जी की बहन डॉक्टर वीणा सहस्त्रबुद्धे एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका रहीं। उनके पिताजी श्री शंकर श्रीपाद बोडस पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे तथा संगीत के प्रचार प्रसार हेतु दिगंबर जी द्वारा ही कानपुर भेजे गए थे।
बड़े बोडस जी एक अत्यंत गुणी एवं समर्पित गुरु थे। उनका ध्येय था कि संगीत को एक सम्मानजनक स्तर पर ले जाया जाए तथा शास्त्रीय संगीत को रोचक बना के आम जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि पैदा की जा सके। अपने पिता के माध्यम से प्राप्त किए गए संगीत के संस्कार का पंडित काशीनाथ शंकर बोडस जी ने सम्मान किया तथा अपनी विलक्षण प्रतिभा के साथ साथ मेहनत और लगन से संगीत जगत में एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया। अब मैं अपने शोध पत्र के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। पंडित काशीनाथ शंकर बोडस जी के जीवन चरित्र, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों के साथ अध्ययन करना, उनके द्वारा प्रस्तुत गीतों, रचनाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संकलन, परीक्षण एवं संगीत शास्त्रीय विवेचन करना, कानपुर सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय, उपशास्त्रीय तथा सुगम संगीत के प्रसार में उनकी भूमिका का अध्ययन करना। पंडित काशीनाथ शंकर बोडस जी का व्यक्तित्व। काशीनाथ बोडस जी को सब प्यार से तात्या बुलाते थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें थीं जिनको जानना एक सच्चे संगीतज्ञ के लिए अत्यंत आवश्यक है। संगीत के क्षेत्र में भीतर बाहर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। उनका मानना था कि संगीत ने हमें चुना है, ये हमारा आनंद है, हमारी उपलब्धि है कि हमें मंच पर बैठाकर सुना जा रहा है, बस इतना ही पर्याप्त है। उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था कि उनका झुकाव कला के प्रति अधिक था, ना कि अपनी कला के प्रचार प्रसार पर। वे एक सच्चे संगीतज्ञ थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका सुरीलापन था। वे जो स्वर लगाएंगे, अगर आपने हफ्ता 10 दिन बैठकर उनको सुन लिया तो उनसे प्रभावित होकर आपके हृदय में संगीत के प्रति रुचि अवश्य ही पैदा हो जाएगी। लय और स्वर का सामंजस्य बैठाकर कैसे स्वरों में पिरोया जा सकता है, यह बड़ी सहज विशेषता तात्या में थी। संगीत का संस्कार किसी भी व्यक्ति में अपनी रफ्तार से पनपता है, उसे थोपा नहीं जा सकता। इस बात को समझते हुए वे बिना किसी रोष को प्रकट किए बड़े प्यार से शिष्यों को सिखाते थे। काशीनाथ बोडस जी की गायन शैली बहुत साफ सुथरी और सच्ची गायकी थी उनकी। स्वरों का सटीक लगाव, भाव, सुरीलापन तथा मधुर गायन था। बहुत क्लिष्ट गायकी का प्रदर्शन करने में वे यकीन नहीं करते थे। एकदम सरल, सुमधुर, राग की अच्छी बढ़त, आकार तथा भाव पक्ष बहुत प्रबल था। जो भी सुन लेता था मोहित हो जाता था। शास्त्रीय और भजन दोनों में ही माहिर कलाकार थे। पुणे के डॉक्टर हरि सहस्त्रबुद्धे जी बताते हैं कि वे ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखते थे, तो उसी शैली को उन्होंने अपनाया, परंतु वे नए प्रयोग एवं नवीनता के पक्षधारी थे। ग्वालियर घराने की जो पारंपरिक गायकी है उसमें विलंबित की लय काफ़ी चढ़ी हुई होती है। उस परंपरा के गायक प्रायः उसी लय में गाते हैं। स्वयं तात्या के पिताजी श्री शंकर श्रीपाद बोडस जी भी उसी लय में गाते थे, परंतु काशीनाथ बोडस जी ने थोड़ी और विलंबित लय में गाने का प्रयास किया। हालांकि यह इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि एक बंदिश का ढांचा लय के अनुरूप ही बना होता है, उसके बल पेंच लय के अनुरूप ही तय होते हैं तथा उसी लय में खिलने वाले होते हैं। लय कम करने पर संपूर्ण ढांचे को बदलना पड़ता है। अब हम आते हैं काशीनाथ जी के सांगीतिक योगदान पे। तात्या के पिताजी श्री शंकर श्रीपाद बोडस जी को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने एक ऐसे शहर में भेज दिया था जहाँ पे अगर कोई गाता था तो पिट जाता था। उस समय कानपुर जैसे शहर में संगीत के प्रति किसी का कान ही नहीं था तथा कीर्तन आदि तक ही सीमित था। उस वक्त के जो बड़े घरानेदार गायक थे वे भी गायन के नाम पर कलात्मकता और तानों की कलाकारी पर अधिक ध्यान देते थे। लोगों को भी लगा कि शास्त्रीय गायन शायद ऐसा ही होता होगा और उसके प्रति आम जनता की अनिच्छा होने लगी थी। शास्त्रीय संगीत एक खास वर्ग तक सीमित था तथा लोग ज्यादा शास्त्रीय गायन सुनने नहीं जाते थे। बोडस जी ने इस बात को समझा तथा सुरीला और सरल संगीत भजनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में लग गए। वे घर घर जाकर भजन सुनाते थे और बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसा होता है कि आपके दिल में कोई भावना है और आप उसको चार लोगों के साथ मिलकर गाने लगते हैं तो वो भावना और मजबूत हो जाती है और सुनने वाले भी उससे उत्साहित होते हैं। किसी एक व्यक्ति के गाने से वो असर पैदा नहीं होगा जो समूह में गाने से होगा। तात्या ने इसी को आगे बढ़ाया और उनके ये कार्यक्रम काफी समय तक चले और लोकप्रिय भी हुए। मैडम प्लीज कंक्लूड। जी सर। किसी भी सुंदर भजन को अच्छे कवियों से लिखवाकर उसकी धुन वे स्वयं बनाते थे तथा बच्चों को समूह में गवाते थे। लगभग 1 घंटे का समूह गान कार्यक्रम चलता था और अंत में लय काफी बढ़ाकर एक आवाज में जब स्वर गूंजते थे इससे आकर्षण पैदा होता था। फिर पूरी जनता भी उसमें भिड़ कर गाती थी। स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति गीत, भजन आदि के समूह गान की उनकी शैली अत्यंत कारगर रही।
वे भजनों के लिए अत्यंत लोकप्रिय थे। उन्होंने शास्त्रीय में भी बहुत सारी रचनाएं की, जैसे कि भैरव में शंकर गिरिजापति द्रुत एक ताल में, अहिर भैरव में आई बसंत की ऋतु, और उनके कुछ प्रचलित भजन हैं, घट घट में पंछी बोलता, सब कुछ जीवित हो व्यवहार, करो मन राम नाम रसपान, मन लागो यार फकीरी में। अंत में काशीनाथ बोडस जी द्वारा रचित उनका भजन मन लागो यार फकीरी में की 2 पंक्तियां मैं आपको सुना के अपनी प्रेजेंटेशन को पूर्ण करना चाहूंगी। मन लागो यार फकीरी में, 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 मन लागो यार फकीरी में। धन्यवाद। Thank you. Now I'd like to invite Sunila Kaustubh onto the stage, and next participants are Preeti Yatin Varang and Shivram Narayan Mopkar. I request them to come to backstage. प्रणाम। शास्त्रीय कलाओं की शिक्षण पद्धतियों में बदलाव 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगीत समारोह 2025 के लिए प्रस्तुत शोध पत्र। प्रस्तुतकर्ता कथक नृत्य शोधार्थी सुनीला कौस्तुभ पोद्दार, मार्गदर्शक डॉक्टर श्रीमती रंजना सक्सेना, JJTU विद्यापीठ, JJTU झुंझुनू, राजस्थान। मेरे विषय का सारांश भारतीय शास्त्रीय कलाओं की शिक्षा परंपरा गुरु शिष्य संस्कार से संस्थागत ढांचे और डिजिटल मंचों की तरफ विकसित हो रही है। यह अध्ययन इस परिवर्तन के बीच भाव, रचनात्मकता और रस की चुनौतियों तथा अंतर्विषयक दृष्टिकोण से उभरती संभावनाओं का विश्लेषण कराता है। भारतीय शास्त्रीय कलाओं की शिक्षा आज परंपरा आधुनिकता के संगम पर ही खड़ी है। भारतीय शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण और नवाचार दोनों के लिए ही गुरु शिष्य की आत्मीयता और अकादमिक संरचना का संतुलन, साथ ही डिजिटल साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही अनिवार्य रहेगा। शोध समस्या मेरे विषय के बारे में, भारतीय शास्त्रीय कलाओं की पारंपरिक शिक्षण पद्धति केवल तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन मूल्यों और संवेदनशीलता का एक संचार करती रही है। आधुनिक संस्थागत और ऑनलाइन माध्यमों ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया, किंतु भावनात्मक जुड़ाव और अनुभवात्मक गहराई सीमित ही रह गई। यह अध्ययन इसी द्वंद्व और संतुलन की खोज को केंद्र में रखता है। मेरे अध्ययन के उद्देश्य है भारतीय शास्त्रीय कलाओं की शिक्षण पद्धति में परंपरा और आधुनिकता का तुलनात्मक अध्ययन। यही दर्शाता है कि तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के बीच भी इनकी मूल भावना संरक्षित की जा सकती है। आदर्श संतुलित शिक्षण कार्य प्रणाली ही संरक्षण और नवाचार दोनों का मजबूत आधार बन सकती है। परिकल्पना, भारतीय शास्त्रीय कलाओं की शिक्षा में आधुनिक पद्धतियां व्यापक पहुंच प्रदान कर रही है, जबकि पारंपरिक पद्धतियां गहराई और आत्मीयता को बनाए रख रही है। इन दोनों का समन्वय ही प्रभावी समग्र और स्थायी शिक्षण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मेरी शोध पद्धति, इस अध्ययन में गुणात्मक और वर्णनात्मक पद्धति का उपयोग मैंने किया था, जिसमें प्राथमिक स्रोत के रूप में 27 प्रतिभागियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली और फील्ड सर्वे शामिल था। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकों, शोध पत्रों और डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया गया था। प्राप्त अंक और अनुभवों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर विषय की गहन समझ विकसित की गई है। तुलनात्मक विश्लेषण प्रश्नावली निष्कर्ष ये साबित कर रहा था,
उनसे ये स्पष्ट हुआ कि अधिकांश प्रतिभागियों ने माने 81.5% ने पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा का अनुभव लिया था, जबकि 74.1% ने आधुनिक माध्यमों का भी उपयोग जताने की कोशिश की। यद्यपि आधे से अधिक माने 55.6% प्रतिभागी मानते हैं कि आधुनिक पद्धतियां मूल भाव संप्रेषित करती है, फिर भी 74.1% प्रतिभागी ने उनमें रचनात्मकता और गहराई की कमी बताई। 92.6 प्रतिभागियों ने समन्वित पद्धति को ही सर्वोत्तम समाधान माना है। तुलनात्मक विश्लेषण प्रश्नावली निष्कर्ष भाग 2 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश प्रतिभागी माने 74.1% आधुनिक शिक्षण माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं, पर 51.9% प्रतिभागियों का मानना है कि पारंपरिक तरीकों से गहराई ही अधिक मिल रही है। 88.9% प्रतिभागियों ने आधुनिक पद्धतियों की सबसे बड़ी विशेषता अधिक छात्रों पर पहुंच और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता बताई। वही पारंपरिक पद्धतियों की सीमाएं जैसे संरचित पाठ्यक्रम, उसकी कमी और समय की पाबंदी सामने आई। कुल मिलाकर दोनों पद्धतियों का संतुलित समन्वय ही शास्त्रीय कलाओं के प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम मार्ग माना गया। मेरी चर्चा में यही खत्म करना चाहूंगी। डिजिटल माध्यम जहां सुलभता और प्रसार में सहायक है, वही पारंपरिक प्रणाली अनुशासन, संवेदना और गहराई की वाहक है। अतः अनुभवी गुरु, व्यक्तिगत संवाद और ऑनलाइन सजीव सहभागिता के माध्यम से आधुनिकता और परंपरा का संतुलन ही प्रभावी समाधान रहेगा। निष्कर्ष, शिक्षण पद्धतियां परंपरा से लेकर डिजिटल युग तक निरंतर विकसित हो रही है, जहां आधुनिक माध्यम पहुंच और शिक्षण पद्धतियां परंपरा से लेकर डिजिटल युग तक निरंतर विकसित हो रही है, जहां आधुनिक पहुंच सुविधा प्रदान कर रहे हैं। पारंपरिक पद्धतियां आत्मा और गहराई बनाए रख रहे हैं। भविष्य की राह दोनों के संतुलित समन्वय में ही है, जो सांस्कृतिक संरक्षण के साथ नवाचार को भी संभव बना रही है। धन्यवाद। Thank you. Now we can start with our foreign research scholars. I request J. Chandana, Ruwan, Kumara onto the stage. She's from Sri Lanka, and next participant is PGCMT Bandara from Sri Lanka. Assalamu alaikum everyone. I, Suraiya Islam Ria, research scholar from Department of Dance, Faculty of Performing Arts, Banaras Hindu University. Today I am going to present the paper on the symbolic, narrative and aesthetic significance of museum sculptures used in Kathak dance, dancers' perspective. So, what I have decided that मैं अपना introduction ये सब घर के time waste नहीं करूँगी, मैं सीधा sorry. Objectives पे आऊँगी. To examine this research paper's objectives are to examine the aesthetic and symbolic meaning of these gestures using classical textual sources, to reimagine commonly used poses and adapted uncommon poses that are not used according to the need of the historic context while maintaining the authenticity, to examine how Kathak dancers can interpret sculpture using tools of abhinaya. मेथोडोलॉजी एंड स्कोप इधर है ही, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना फाइंडिंग्स में ही जाऊँ. My analysis of museum sculpture revealed that both medium employed identical hasta, pada, shira and katti. जैसे इसमें नाटराजा का जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है और पंडित राजेंद्र गंगानी गुरुजी का जो फोटो है, ये एकदम आइडेंटिकल है. दूसरा, most of the poses found in museum sculpture are also seen in the both aspects of Kathak dance, Nritya and Nritya.
नृत्य में हम लोगों को मिलते हैं आमद, परन, गतनिकस, इसमें सारे पोजेस जितने भी डेटीज हैं उन लोगों का मिलते हैं। एंड नृत्य में आते हैं वंदना, भजन, कीर्तन, श्रुति, अष्टपद, ठुमरी, गदभाव, समटाइम्स चतुरंग, चतुरंग में भी होते ही हैं। पर जब मैंने ये पूरा आर्टिकल जब मैं कर रही थी और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे ये एक दो चीज़ और मिली। वो है कि कुछ कुछ पोजेज है जो कथक डांसर्स में यूज़ नहीं होते हैं, जैसे नटराजा, ये दोनों भी नटराजा पोजेज ही है, लेकिन ये नीचे के जो राउंड सर्कल में है ये यूजेस नहीं है। मैक्सिमम जितने भी डांस परफॉर्मेंसेस मैंने एनालाइज किया उसमें मुझे नहीं मिले। इवन महिषासुर मर्दिनी तो मिलते हैं। नीचे सर्कल में और भी है, ये पुणे म्यूजियम में है गणेश जी का, जो नहीं मिलते हैं और यूज़ नहीं होते हैं कथक परफॉर्मेंसेस में। देन बालकृष्णा नेशनल म्यूजियम दिल्ली जो सर्कल में है, ये भी बहुत कम यूज़ होते हैं, इवन तो यूज़ होते ही नहीं। भरतनाट्यम या दूसरे क्लासिकल फॉर्म में यूज़ होते होंगे पर कथक में बहुत एडेप्टेशन कम है। तो मेरा ये इस रिसर्च का मोटिव था कि इन सब पोजेस को मैं निकालूं ताकि ये स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलके नया इस पोजेस को हम एडप्ट कर सके और नया कुछ सामने ला सके विद द ऑथेंटिक वाइल मेंटेनिंग द ऑथेंटिसिटी। अब मैं सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि एस्थेटिक को ऑलरेडी आभा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके गए हैं। सो मैं थोड़ा सा बस महिषासुर मर्दिनी का सिग्निफिकेंस, सिंबलिज्म, सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करूँगी। देवी का जो 10 हाथ में उनका जितने भी अस्त्र शस्त्र त्रिशूल ये सब है, उस हर एक का एक पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं जो डांसर्स जानते तो है पर शायद इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे त्रिशूल, ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन को दर्शाते हैं। सुदर्शना चक्र जो विष्णु जी से मिला हुआ है उनको, ये ऑर्डर, यूनिवर्सल ऑर्डर, टाइम एंड सर्कल को दर्शाते हैं। शंख, शंख जो विष्णु जी से मिला हुआ है वो पवित्र साउंड ओम को एंड ऑस्पिशियस बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बो एंड एरो ये एनर्जी, फोकस एंड एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वॉर्ड जो दुर्गा जी का खुद का माना जाता है वह नॉलेज और डिस्क्रिमिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। गदा स्ट्रेंथ, ऑथोरिटी, पावर ऑफ क्रश इविल को रिप्रेजेंट करते हैं। लोटस प्योरिटी और स्पिरिचुअल एलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो अभय मुद्रा उनमें मिलते हैं वो फियरलेस और प्रोटेक्शन को दर्शाते हैं। अब ये सिग्निफिकेंस जानने का इम्पोर्टेंस क्यों है? I believe without knowing significance, narrative behind the story and aesthetic, textual जो sources है उसके aesthetic जाने बगैर आप या मैं कभी भी on stage कोई भी deities है, कोई भी posture depict करना is too tough, क्योंकि मैं itself मैं रिया हूँ, मैं माई सेल्फ लिया हूँ। सो मैं कैसे एक डेटी को रिप्रेजेंट करूँगी विदाउट नोइंग ऑल ऑफ दिस। सो दिस इज़ वाई ये इम्पॉर्टेंट है कि हर एक डांसर्स को ये जानना, क्योंकि हम अगर भाव मेरे अंदर ही नहीं आएगा तो आपके पास वो नहीं पहुँचेगा, वो रस निष्पत्ति नहीं होगा। और ऑल द इंडियन आर्ट फॉर्म्स स्पेशली क्लासिकल डांसेस नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, दिस इज़ द पाथ ऑफ आत्मा को परमात्मा तक जाने का। सो ये जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। सो एक्नॉलेजमेंट में थैंक यू। एक्नॉलेजमेंट में मैं I express my sincere gratitude to my research guide Professor Dr. Vidhi Nagar ma'am, head of the department, Faculty of Performing Arts, Bandara in the University, and for her invaluable guidance and insightful suggestions. I'm also thankful to all the scholars whose works provide essential resources and inspiration for this research. Thank you. Thank you very much. Now I like to invite J. Chandana Ruwan Kumara from Sri Lanka. And next participant is PGCMT Bandara from Sri Lanka and Chameera Lakshan from Sri Lanka. Good evening all of you. I am Chandana Ruwan Kumara,
PhD scholar from Department of Instrumental Music, Banaras Hindu University. I am basically from Sri Lanka. My research title is The Iconography of Female Musicians in Indian Buddhist Art. In Buddhist literature and art, women are depicted in variety of roles, from traditional figures like mothers and wives to spiritual ones such as nuns and bodhisattvas. These portrayals reflect both societal expectations and spiritual ideals. So, while some texts reveal ambivalence toward women's roles, especially in early Buddhist tradition, many also highlight their capacity for enlightenment and spiritual achievements. So, this research is examining the visual and symbolic representations of female musicians depicted in Indian Buddhist art. So, these are the sites. These are the objectives to analyze the representation of female musicians in Indian Buddhist art, to explore the religious, cultural and social significance of female musicians within Buddhist artistic and doctrinal context, to examine the variations in iconography across different periods and regions of Indian Buddhist art, to investigate the role of gender in Buddhist visual culture. So this is my research methodology. Basically, I am using qualitative research, descriptive and historical. For data collection, I used literature sources, library survey, map studies, Tripitaka, Jataka and scholarly studies, archaeological findings, field visit, museum, online materials. Basically, I am using the theory of Erwin Panofsky's method of iconology and iconography. Representation of female musicians in Indian Buddhist art: Ajanta Caves, Bagh, Sanchi, Amaravati, Nagarjuna Konda, Mathura, Bharut, Gandhara, Pitalkora. So these depictions I found from Ajanta. These are from Bagh Cave Temple. These are from Sanchi. These are from, left side is from Amaravati, right side is from Nagarjuna Konda. This is from Mathura. This is from Bharut. This is from Gandhara Buddhist art. This is from Pitalkora. So I will be discuss in detail about this iconographical evidence in my full paper. So this is my conclusion. Women are depicted playing various instrumentals such as the lute, veena, flute and drum, often alongside male musicians. This highlights the significant role of women in the cultural and musical life of that time. So these depictions suggest a relatively egalitarian view of women in society, particularly in artistic expression. Women were involved in religious or court music, and their musical performances were not limited to private spheres but could also be part of public or ritual events. It is significant as it contrasts with the more restrictive female roles that emerge in certain periods of Indian art history. And thus it can be concluded that the perspective of Buddhism has neglected the caste and gender status religiously and artistically. Thank you. This is my bibliography. Thank you. From University of Kelaniya in Sri Lanka. Today I am going to talk about a study on the influence of North Indian raga-based music on Sri Lankan Nurti theatric music. Sri Lanka and India share an inseparable relationship from ancient time to this very day. The two countries have been bound together culturally, socially, politically, economically and religiously. From the earliest period, Sri Lankan drama created the influence of Sanskrit theatre.
Later, during the Kantian era, strong South Indian culture elements share the Nadagam tradition in our country. With the arrival of British ruler, a new educated middle class emerged in Sri Lanka. For their entertainment, the troops from abroad invite to perform here. Around the same time in India, under British dominance, the Nawab of Lucknow, Wajib Ali Shah, introduced a new form of theatre. One of this court poet, Imnath, with the guidance of a French minister, composed the famous play Indra Sabha. Inspired by this style, Parsi theatre companies began stitching drama across India from 1853 onwards. These performances soon reached Sri Lanka as well. My research problem of this study is to examine how the North Indian musical component were adapted in the creation and performance of Nurti music. The objective of this study are fourfold. First, to identify the North Indian raga-based musical elements that influence Nurti theatre. Second, to recognize the way in which their musical elements were applied in the creation of Nurti. Third, to evaluate whether the use of North Indian raga-based music contribute to the popularity of Nurti theatre in Sri Lanka. And finally, to assess how Nurti music has influenced contemporary music. For the research methodology, I use qualitative approach. This allowed to me explore in depth the complex artistic relationship between Nurti theatre music and raga-based music. The POFAs evaluate the three stages: collecting data, analyzing data, finding and developing the study further. Yes. What made these dramas especially attractive was their use of North Indian raga-based music. The melodies and rhythm were captivating, and Sri Lankan audience quickly developed a taste from them. Encouraged by this response, in 1877, and Dominic C. Don Bastian created a play titled Rolina. This marked the birth of a new dramatic tradition in our country. At first, it was called Nruta from a Sanskrit word, and later became popularly known simply as Nurti theatre. From 1877 up to about 1952, a span of nearly 75 years, Nurti theatre flourished across Sri Lanka. It was during this period that North Indian raga-based music elements became firmly embedded in our performance art. This influence can be seen in the very beginning of Nurti. The earliest production were accompanied by Indian musicians such as Vishwanath Lauchi, who brought with them the authentic tradition of Hindustani classical music. Through their contribute, ragas were carefully woven into Sri Lankan theatrical song. Even when listening to the performance, it became evidence that the characteristics of North Indian raga-based music have been incorporated into Nurti song. Moreover, ornamental elements of raga music such as Murki, Gamak and Khan have also been included in Nurti. Significantly, instruments like that tabla, sitar and sarpina were used from the first time in Sri Lankan musical through Nurti. Yes. Nurti song became immediately popular among the Sinhalese public. By the earliest 19th, with the arrival of the gramophone, many of these songs were recorded and spread widely. Later, celebrated musicians such as Pandit W.D. Amaradeva, Dr. Nanda Malini and Dr. Vikram Ratnayakar reviewed these pieces through radio programs. Even in modern time, groups like Sihasakshti and popular duos such as Bhatia and Santosh have reinterpreted Nurti song, blend them with contemporary music style. All of this shows as something very important for 1877 to the present day. Nurti music has first deep and lasting mark on Sri Lankan music. Even today, the dominant musical foundation of our country is built on North Indian raga system, a tradition that entered our culture through Nurti theatre. Sri Lankan doing from this rich influence create a unique musical identity
distinctively Please finish. locally yet deeply connected to the North Indian raga heritage. This fusion contribute to inspire and shape our musical today. Thank you very much and Ayubowan. Thank you very much. Now I'd like to invite Chameera Lakshan from Sri Lanka, and our next participants are Isuru Rushan. And I request Patanjali Mungar and Guna Singh, if they are here, they can come to backstage. Good afternoon, everyone. I am Chameera Lakshan, postgraduate student from Department of Dance, Banaras Hindu University, Varanasi, basically from Sri Lanka. My research topic is a study of the evolution of Kathak dance tradition in the Darbar. Introduction. Kathak, one of India's eminent classical dance forms, began in temples as a devotional storytelling tradition performed by Kathakars who narrated episodes from the Ramayana, Mahabharata and other epics. With the decline of temple patronage during the Mughal period, Kathak moved to royal courts where it absorbed Mughal and Persian influences, developing a refined classical style. Accordingly, this study examines the evolutions that led to the development of Kathak as classical dance tradition under royal patronage in the Darbar. Objectives. The studies focused on the patronage of the Kachwaha rules of Jaipur, the Nawab of Lucknow, especially Wajid Ali Shah and Maharaja Chakradhar Singh of Raigad, each of whom shaped distinct gharana. The research also considers the impact of Hindu, Mughal, Persian and region influences that enrich Kathak's style. Ultimately, it highlights how these three darbars left lasting legacies that define Kathak as a major classical dance form. The scope of this research lies in identifying the significant changes that Kathak underwent throughout its journey of development, highlighting the role of each darbar on its artistic formation. The study will continue to explore the contribution of the Jaipur, Lucknow and Raigad darbars and compare the niche elements and how they are reflect in contemporary performance of Kathak. Research methodology. This study follows a qualitative approach to teach Kathak's evolution in the Jaipur, Lucknow and Raigad darbars. It draws on literary sources such as classical texts, historical records and biographies, compare the three courts in terms of style, themes, patronage and repertoire. Findings. Jaipur Darbar, Maharaja Ram Singh's ring saw dance texts like Hastak Ratnavali and Patur, while Maharaja Swai Jai Singh employed over 750 artists under the Gunjan Khana. Later rules, especially Maharaja Madhav Singh, encouraged leading dancers such as Shamlalji, Nathulalji and Gauhar Jan, which helped establish the reputation of the Jaipur Gharana, known for its rhythmic strength and Hindu devotional spirit. Darbars show how temple-based devotion transformed into a classical tradition through royal patronage and cultural exchange. Jaipur emphasizes rhythm and technical mastery. Lucknow under Wajid Ali Shah refined Abhinaya with Tumri, Ghazal and Rahas, while Raigad under Maharaja Chakradhar Singh blended both styles, introduced rhythmic innovations and documented compositions. Together, this darbar shaped Kathak's classical identity, leaving legacies that continue to inspire and sustain the art as
both tradition and living performance. Thank you. Thank you. Now I request Isuru Rushan onto the stage. Scholar from Banaras Hindu University. Today I am presenting my research paper. My research topic is a comparative study of the Nanumure dance of Ridyage Shanti Karme in Sri Lankan Lokantra traditional dance and the Solha Shungar used in Kathak Abhinaya in India. Introduction. The Ridyage Shanti Karme depicts female character Lokantra dance tradition of Sri Lanka and the Kathak dance tradition of India. This study has investigated the female activities that are presented in the Nanumure dance of Ridyage Shantikarme and the Solhashungar of Kathak dance. Objectives. This study aims to examine female expressions in a social context through a comparative analysis of the activities of the two dance forms mentioned above. Therefore, this research aims to examine the differences and similarities between these dance forms and how they express women's role in their social context. Even though these two dance traditions are from two countries, the Nanumure dance form and Solhashungare depict female characters. This study focused on the activities related to the portrayal of female characters in both the Nanumure dance element of the Ridyage Shantikarme and the Solhashungar element used in the presentation of gestures in the Kathak dance. This study utilized two sample groups, Sri Lankan Ridyage Shantikarme artist and Indian Kathak artist. A qualitative research methodology is chosen for this research and a mixed methodology approach of phenomenology, artistic formalism analysis and iconography is used for data analysis. Primary and secondary data were collected through methods such as observation, interviews, video recording, photography and library studies. Findings. This study presents the female characters of Nanumure and the dance of Solhashungare as a common element, but the purpose of presentation are different. That is, the activities of the Nanumure dance symbolize the purification process that a woman must undergo before pregnancy, and the action of the Solhashungar dance depict a woman preparing for her husband or lover before his arrival. Also, female character is in this dance are traditionally in Nanumure played externally by male dancers, while the Solhashungar act in Kathak is performed by both male and female dancers. Another finding confirmed by this study is that in the Nanumure dance item, male dancers dress up as women. All the male dancers participate in Solhashungare, they don't wear jewelry and costumes as ladies. This study visualized that when performing these activities, the Nanumure dance is performed using relevant theoretical equipment made from natural materials. And when performing Solhashungare in the Kathak dance, the theoretical equipment required for those activities is presented through gestures. This study suggests the female character is common factor and that presentation and objective of the dance are different. In the Nanumure dance item, the female character are portrayed by male dancers. However, in Kathak, the Solhashungar portrayed both female and male dancers. This implies a statement of social and cultural value based on the cultural norms and practice that have developed towards women in the two countries. In conclusion, this study relevant all the both dances form are used the poetry women. There are differences in the purpose and activities of presentation. Also, women expression in social context various
culturally. Thank you so much. Thank you very much. Thank you all the participants. Now I would like to invite respected chairpersons for their expert comment. To congratulate all the paper presenters for their very upcoming papers and who have discussed about their research in a very short span given to them. So we would like to go with the first presentation was on Corona and status of music. I would like to look into, the researcher was looking more into the role of Hindustani music during Corona pandemic and how online music and digital platform Guru Shishya Parampara, how Guru Shishya Parampara, from Guru Shishya Parampara it was a cultural shock again to come on to the online, and how these the great doyens of music started adopting, the very traditionalists also started adopting online platforms to impart knowledge. So including live workshops, live concerts and live seminars. Though we looked into all these things in this paper, we expected a little bit more of statistical data which is coming up in, and it was just said that these were the things that were happening, and these were the things were very well known after severe pandemic. All artists, all art fraternity people were looking into these things, but a little bit of more in-depth research into it would have been appreciated. But certainly it's a very, very, very welcoming thing that we are trying to see. At this point, what I observed is how exactly the traditionalists are adopting modern platforms. That was the key catch of this paper. So then we have Miss Abha Singhal Bansal trying to tell about the reconstruction of Natya Shastra tradition and Kathak through medieval sculptures of northern Gujarat. Here we had two papers on it. One is on the museum sculptures and trying to look into its influence in Kathak and these things. So in both the papers, it's a very nice thing that people are trying to understand and trying to correlate with Natya Shastra. But the thing which again comes here is when we are trying to look into the gharana or anything as such, we all know that Natya Shastra is the very basic text things. The very positive thing is now people who are following Bharatnatyam, Odissi and all these people are trying to see its reflections through their sculptures and trying to correlate with Natya Shastra. The important thing here is how different art forms or people or artists from different art forms are trying to understand or trying to identify their elements in these sculptures. It is not that these elements of Kathak are present in those sculptures, because Bharatnatyam is just today's Bharatnatyam is around just 250 years old. Before it was called Sadir Nach Dasyatam, but we derive its influences from these. So looking at these perceptions of understanding the elements of Kathak in these sculptures certainly leads us to understand and how exactly the very history of Kathak can the roots of these be traced to Natya Shastra, or how is it, and how exactly, if it is not according to Natya Shastra, when did it deviate and how did it deviate? And how exactly the local elements specially are influencing on these art forms to be recognized today as these art forms as Kathak and Bharatnatyam. And then we go to the Dr. Anjali Devi Yadav, who also talked of Guru Shishya Parampara and Parivartan, and especially she was talking on the pedagogy, education during colonial period and modern period, and
especially the role of how Bhatkhande played a major role in the concepts of pedagogy. That was an interesting paper. Then we had Sonali Marandi, who was talking of digital aesthetics strategies on Instagram versus YouTube. The very today's happening, how Instagram, we generally try to understand that Instagram and YouTube or anything as such is just a social platform. But a researcher getting now into how are the differences happening between Instagrams and YouTubes, its viewership, and how serious Instagrams are versus YouTube is certainly a welcoming thing. But the thing is, which needs to be more understood here is to what level the tradition has been kept up, or within a span of just a few seconds in Instagram, what are its reflections of tradition and how exactly is it deviating, if not deviating, still in spite of the media being changed to digital platform, the tradition is being still. So those observations are very much required now, apart from the viewership statistics now. So because as we are progressing towards digital India, everything is coming on digital platform. The most important thing what India also talks about is about ancient Indian knowledge system. So how exactly ancient Indian knowledge system can it sustain in today's digital form, or is it taking a very deep curve in the graph of Indian art? And then we go to Srimati Malini Ramsubramanya. She talks about the twin ragas in Tyagaraja lineage. The very important thing in this paper was schools of thoughts of Tyagaraja and its classifications, and especially how exactly the school of thought of Tyagaraja is continuing also through his students, and she comes out with the statistics of 10:1. But still the thought of Tyagaraja continues in the composition of his students also. It was certainly a very painstaking research that has been done, how exactly the deviation is happening and how exactly the originality of the student's composition is there, but still the teacher's thoughts are lingering upon the students' compositions. And guess so that becomes a very, very important point for today's young choreographers to see that their gharana is not lost, their teacher's school of thought is not lost while they're adopting the trends or creating a new trend. That was a very interesting point. Then we have Somitra Thakur, who was talking on Surbahar in Bishnupur Gharana and form of courts of and how exactly it has taken its shape. And the analysis was also looking into Surbahar's tradition, Bishnupur Gharana, and how exactly it becomes a very important, because it's one of the oldest gharanas has been claimed by the researchers, and how exactly it is playing its impact on, and how exactly it is rooted in Drupad's aesthetics. So how exactly Drupad aesthetics comes with its reflection. And we find Vrishali Dwivedi talking on Kashinath Shankar Boda's life contributions. Okay, this was one of the papers on life contributions. Yes, on one point we need to look back into the contributions of the great Buzurgs and how exactly it is continuing, and what are the lessons to be taken from those compositions, and how the modern trend has to follow through with the foundations of it. But it's not that, it has to be completely only that, but taking the very fundamentals of that, how exactly we can proceed further in the same genre of learning. So then we have Sumila Kaustuba Poddar, training of classical art forms, focusing on pedagogy again, on modern times related to teachings of classical art forms. So it becomes very important to bridge the connect between the past and the present. Teaching forms are changing, government reforms are changing, educational ministry instructions are changing, needs to be adopted.
the old traditions, the Guru Shishya Parampara, to the semesters and trimesters, syllabus oriented and stress related these things. So these are very important, and this scholar comes out with a lot of statistical analysis which is very interesting to look into. Then we have Suraiya Islam Ria, who is talking of symbolic narrative and aesthetics of museum. Yeah, I addressed this combining with this thing, but one of the most important thing here is we are all talking of Natya Shastra. Especially the interesting was the Natesha Shiva she's talking about the bronze sculptures, which comes from the Tamil Nadu during the Cholan period. But however, these Cholan bronze casters also had their influence from the Agama Shastra. However, though the Cholan sculptures and the Cholan sculptors are completely regional based, the Agama Shastras are pan-Indian text. So the regional people are getting influence from pan-Indian text. So also the pan-Indian text could have influenced the rest of the India. So rather than calling as Nataraja, which is specifically for Tamil Nadu and the Chola bronzes, it's also not available in Karnataka, we can call it as Nartana Shiva, where we find the Tandava Shiva or the Nartana Shiva. So this is an important part where we try to look into it, and it's a narrative. So we have J. Chandana Ruwan Kumara from Sri Lanka, talks of Buddhist sites in India, and especially female musicians in Buddhist art. This is very interesting to note that how exactly women's studies are proceeding further, just to look into the aesthetics of women and its reflections through sculptures and paintings, and certainly Buddhist art itself. And one of the most important thing is we also looked into a paper which had the influence. I'm combining this thing, which also talked about the Buddhist narrations, which is very important because we have the Tripitakas and we have Deepavamsha and the other texts in Buddhist texts. What do they tell about women? Most important thing to be understood. Then what are its reflections in religious prescriptions? Then how these religious prescriptions are coming on to the canvas of art, of painting and sculptures. So this methodical procedure of understanding is very important, and that will be a very important contribution. I guess so. The rest of it will be said by Shri Vedprakash ji. So I give the mic to Shri Vedprakash. थैंक यू। तो ज़्यादातर बातें तो आपको मालूम हो गई आपके पेपर्स के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नए और पुराने, नवीन और पुरातन के बीच का संघर्ष अब भी है, पहले भी था और आगे भी चलता रहेगा। आप लोगों ने प्राचीन में नवीन को ढूंढने की कोशिश की और आगे भी करेंगे, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि परंपराएं भी रहें और नया सृजन भी हो, यही शायद कला जगत चाहता भी है। और अनुसंधान में ये बहुत आवश्यक है कि आप चीज़ों का विश्लेषण बहुत गहराई से करें। ख़ास तौर पे जो पीएचडी करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये जो पहले कोर्स वर्क करवाया जाता है उसको ज़्यादा गंभीरता से अगर लेंगे तो आपका रिसर्च पेपर भी और अच्छा हो सकेगा। एक तो अपना कोर्स वर्क गंभीरता से लें, दूसरा संगीत थ्योरी और संगीत प्रैक्टिकल दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसा कभी मत सोचें कि थ्योरी को जानना कुछ फ़ायदा नहीं देता म्यूज़िक में। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को बराबर फोकस करके अगर आप चलेंगे तो भी आपके रिसर्च में बहुत निखार आएगा। फिर खाली म्यूज़िक की बुक्स नहीं पढ़िए आप। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको टोटलिटी में पढ़िए। खाली सिर्फ म्यूज़िक को पढ़ने से आपको अधूरा ही रह जाता है हिस्ट्री का जो नॉलेज है। जैसे कि मध्यकाल, अभी कोई रिसर्चर ने मध्यकाल को जनरलाइज कर दिया था कथक के संदर्भ में, तो मिडिवल पीरियड जो हिस्ट्री का है, तो वो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मध्यकाल बहुत शुरू से और बहुत समझिए कि अंग्रेज़ों के समय तक रहा है, तो उससे हम कथक के पीरियड को डिसाइड नहीं कर सकते खाली मिडिवल पीरियड कह देने से।
ऐसी बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो रिसर्चर्स के लिए यही है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, प्राचीनता और नवीनता के संघर्ष की चिंता ना करें। वो आप चाहे परिवारों में देख लें, आप पुरानी परंपराओं के संरक्षण के लिए क्या क्या नहीं हो जाता है, आप समाचार पढ़ते ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी जो नया खून है, नई पीढ़ी है, वो कुछ कुछ इनोवेशन से अपनी बात अपने पूर्वजों से मनवाती ही रहती है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो यदि इन बातों का ध्यान हम लोग रखें तो हमारा जो रिसर्च का क्षेत्र है, रिसर्च के जो पेपर्स हैं वो और अच्छे होंगे और निखर कर सामने आए होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ बातें हुई उनका ध्यान रखकर आगे और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Just a minute. I have just 2 points. Sorry. Yeah. Especially for the very people who have just started their research, and when we saw here, the aims and objectives should be to the title for what you have taken, but not to the whole thesis what you are doing. A thesis is a 6 years old. 6 years of time what you're going to take, and that will be a the aims and objectives will be broad, but it should be very point specific to the aims and objectives, especially it should reflect the title. So kindly look into this aspect such that you become very precise when you come to the findings. And last but not the least, I would like to thank Mr. Amrut, who sat here as Kala Bhairava, who kept the time for us. I thank him very much. Thank you so much. Now, I would request Professor Gyanendra Bajpayee ji to please come on the stage. And now we'll have a break for lunch, and sharp at 3 we will start our next session.